Good evening, friends. Namaskar, dosto. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you're watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 604 604th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन में. There is fighting going on there and all eyes are focused on that. But let us not forget that COVID has not gone away and the official global death toll from coronavirus is on the verge of crossing the 6 million mark. In China, cases have risen by their highest ever since the Wuhan outbreak, and this is in spite of the zero tolerance policy of the country. तो जो वुहान वाला वायरस है वो अभी भी चाइना में बरकरार है. On the other hand, in India, our third wave is over, mercifully, and our weekly cases are at a 22-month low. In the last 2 years, almost 2 years हो गए हैं जब पहला लॉकडाउन हुआ था, we are at the lowest in these 22 months. An expert panel of our Central Drug Authority has recommended permission for conducting a phase 3 clinical trial of the Covovax vaccine as a booster dose in adults. So study is still going on COVID. And Belgium is set to remove all its COVID-related restrictions from today, ending a requirement to wear masks in almost all places and scrapping the need to show a COVID-19 pass for indoor venues. तो अगर आप बेल्जियम में हैं, ब्रसेल्स में तो हैं, तो अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है और कोविड पास नहीं चाहिए. You don't need to prove that you have been vaccinated. अब ये तो चलता ही रहेगा, कोविड भी चलता रहेगा और यूक्रेन होपफुली जल्दी शांति की तरफ, अमन की तरफ बढ़ेगा. We hope that peace prevails, good sense prevails across the world. But let's go to our topic for today. There are some things that will remain forever and ever. Let's see what this topic is. And हमारा आज का टॉपिक है sleep wake cycle and diabetes. So we'll be speaking about diabetes, but specifically we'll be talking about sleep. नींद के बारे में बात करेंगे. अब ये भी क्वेश्चन मार्क उठता है, Why should we speak about sleep? ये भी कोई हेल्थ की बात है क्या? नींद तो सबको आती है. Everybody sleeps. Is it important? Is sleep a method of preventing disease? Is it a method of promoting health? Is it a target of illness? Is it a technique with which to correct illness? Let's find out, and for this we have our guest, Dr. Sandeep Suri. Dr. Sandeep will join us shortly. वो join करेंगे तो उन्हें introduce करते हैं. In the meantime, warm greetings to Mr. Sharma from Lucknow and also Anjan Sahil. Hi Anjan. ये बड़ा एंडी सा नाम है, Anjan Sahil. So Anjan, what does Anjan mean and what does Sahil mean? ये तो बताओ हमें. So while we wait for Dr. Sandeep, let's talk about sleep and diabetes. पहले स्लीप वेक साइकिल की बात करते हैं. तो लेट्स आस्क एवरीवन, आप कितने बजे सोते हैं? कितने बजे उठते हैं? दिन में एक ही बार सोते हैं, मतलब रात को, या दोपहर का भी सिएस्टा लेते हैं? डू यू स्लीप वंस इन 24 आवर्स और मोर देन वंस? व्हाट इज योर स्लीप पैटर्न? व्हाट इज द क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ योर स्लीप? जब आप सोते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी कैसी होती है? What is the quality of your sleep? Do you get bad dreams? Do you get nightmares? बुरे सपने आते हैं, भयंकर सपने आते हैं, और do you get good dreams and happy dreams? किस तरह के सपने आते हैं? आते भी हैं या नहीं? That is the quality of sleep as you decide. डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर हैं हमारे साथ. सर इज अ पीडियाट्रिशियन. जब आप सोते हैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह सोते हैं. That means बिल्कुल without any चिंता, without any issues in the world. या जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग में टेंशन घूमती रहती है. When you sleep, what is the quality of sleep of the people around you? Do you snore or not? Do you grind your teeth? इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रक्सिज्म. आप अपने दांत चबाते रहते हैं क्या नींद में? आप खराटे लेते हैं? Do you speak in your sleep? Do you walk around in your sleep? So see, so many things related to sleep now. The pattern of sleep, the quantity of sleep, the quality of sleep. So many things are connected. We also welcome प्रकाश वधवानी जी. आपका भी हार्दिक अभिनंदन सर हमारे प्रोग्राम में.
बिमला कपूर मैडम जी भी हैं, डॉक्टर आर एस चौधरी सर हैं. गुड इवनिंग सर, एंड वेलकम टू यू एज वेल. अनजान अब कह रहे हैं कि मुझे 2 साल से बीपी हाई हो रहा है, बट साहिल भैया एज कितनी है ये भी बता दो. सो वील ऑल्सो टॉक अबाउट स्लीप एंड ब्लड प्रेशर, स्लीप एंड डायबिटीज, स्लीप एंड हार्ट डिजीज, ये भी सब बातें करते हैं. So while we are discussing all this, suddenly we realize, Anshu Singh ji also realizes that there are so many facets to sleep. नींद के इतने सारे पहलू हैं और हमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में. अभी तो स्टोरी खत्म भी नहीं हुई, अभी तो ट्रेलर है. जब आप सोते हैं तो आप किसके साथ सोते हैं? Do you sleep with a loved one? Do you sleep with your pillow? Or do you sleep with your mobile phone? Or maybe your laptop or your tablet? Who is your favorite sleeping companion? आपको लोरी कौन सुनाता है? What do you think of when you are going off to sleep? भगवान का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं. Do you think of God? Or maybe do you think of some horror movie or some exciting thriller movie that you saw during the day? So what is it that puts you to sleep? डॉक्टर जयदेव पाटिल जी भी हैं हमारे साथ, एंड अश्विनी बग्गा जी जो इंडस्ट्री लीडर हैं म्यांमार से, उन्होंने भी लॉग इन किया है. सो वार्म वेलकम अश्विनी जी, मिंगला बार टू यू. सो लेट्स आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, एंड सब लोग अगर चैट बॉक्स में डालें आपकी स्लीप कैसी है, द क्वांटिटी, द क्वालिटी, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्लीप दैट यू एंजॉय. आपको कभी नींद की दवाई लेनी पड़ी है? डू यू टेक एनी ड्रग्स टू स्लीप प्रॉपर्ली, और डू यू टेक एनी non-pharmacological therapy intervention, maybe a glass of hot milk, maybe something else, कोई और हर्बल ड्रिंक या कोई और चीज लेते हैं रात को सोने के लिए? लेट्स फाइंड आउट. संजीव पुरी जी भी, अनामिका जी, सबको वेलकम करता हूँ, एंड वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर संदीप सूरी, बट इन द मीन टाइम लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. डॉक्टर के एम प्रसन्ना कुमार सर भी हैं, वार्म वेलकम सर. सो व्हेन वी टॉक ऑफ स्लीप, mostly we feel that sleep is something natural. It will come to all of us. Point well taken. Everybody sleeps. And we assume that nothing can affect our sleep. But here we may be wrong. Now, disease can cause sleep disorders. Sleep disorders can cause other disease. And both of them can just be correlated with each other. They just might coexist with each other. So there are different ways in which sleep is associated with metabolic disorders. अनिरुद्ध जी कह रहे हैं नेवर टेकन पिल्स टू स्लीप. दैट्स गुड अनिरुद्ध, सो दैट मेक्स मोस्ट ऑफ अस. एंड हैरानी की बात यह है दैट व्हेन यू आर इन यूएसए, जो मैक्सिमम दवाई बिकती है वो नींद की दवाई बिकती है. सो नेवर टेकन पिल्स टू स्लीप इज ग्रेट, बट द फेवरेट कंपेनियन इज द मोबाइल. अच्छे से जप्पी डालना अनिरुद्ध उसको. इज इट ब्लैक कलर और व्हाइट कलर? And Sahil is a young boy from Kashmir and age is only 24. So 24 पे अनजान, ideally you shouldn't have blood pressure. अगर blood pressure है at the age of 24, it might be what we call secondary hypertension. Secondary hypertension मतलब there has to be a reason. It can be a kidney disease, it can be an adrenal disease. ये सबसे common है. तो एक चेकअप जरूर होना चाहिए. पहला चेकअप जो होगा अनजान, that will be आपका बीपी चेक होगा चारों लिम्स में, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग, एंड आपका बीपी चेक होगा while sitting, standing and lying down. So that is the first test to be done. Pradeep ji points out that there is a relationship between melatonin and sleep. So that is true. Melatonin is a hormone. ये melatonin आता है from the pineal gland. So Anirudh is from India, age is 31. So lots of young handsome boys with us today. So when you read in Indian philosophy about तीसरी आंख, the third eye, it actually exists in anatomy. मॉडर्न मेडिसिन में जिसको हम इंडियन फिलॉसफी में थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, दैट इज नोन एज द पिनियल ग्लैंड. छोटा सा ग्लैंड है राइट इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल सेंटर में है. एंड पिनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं. मेलाटोनिन टेल्स अस अबाउट द डे एंड नाइट साइकिल. तो कैसे पता चलता है ह्यूमन बीइंग्स को, कैसे पता चलता है जानवरों को या चिड़िया को कि कब उठना है, कब सोना है? सुबह जब जो
जो नाउ आई जस्ट फॉरगेट द हिंदी वर्ड, कुक्कड़ की हिंदी मैं भूल गया। जब चिकन बांग देता है, सो व्हेन द रूस्टर वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग एट डॉन, सो कॉकक्रो एट डॉन, तो कैसे पता चलता है उस रूस्टर को कि सुबह आ गई है? ही हैज टू वेक यू अप। रात को कैसे पता चलता है सब जीव जंतुओं को, जानवरों को, कि इन्होंने सोना है? एंड अंशु, थैंक यू, मुर्गा, मेरा भी मुर्गा बन गया, एजेंडा बन गया मेरा हिंदी में। थैंक्स अंशु। सो एंड थैंक्स डॉक्टर राजीव अवस्थी। डॉक्टर राजीव अवस्थी इज अ सीनियर physician from Lucknow. Thank you, sir, for joining us. Thank you, Brijesh. आज तो मैं ही मुर्गा बन गया. So, so how do we get to know? How do all the animals and birds get to know कि कब सोना है, कब जागना है? This is based upon their तीसरी आंख. As human beings, हम भी ये follow करते थे. If we go back to, let us say, 100 years ago or 1,000 years ago, electricity नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो अंधेरा होता था रात को, एंड एट द मोस्ट व्हाट विल यू हैव, एक आध दिया, एक आध मोमबत्ती घर में, तो उस पे कोशिश होती थी उस लाइफस्टाइल में कि जितना भी मैक्सिमम काम है आप डे लाइट में कर लें. सो वेदर इट इज हैविंग कुकिंग डिनर, हैविंग डिनर, स्टडिंग, डूइंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, यू वुड वांट टू डू इट इन द डे टाइम. तो अंधेरा होगा तो देन मिनिमम एक्टिविटीज एंड यू गो ऑफ टू स्लीप अर्ली, एंड देन यू वेक अप अर्ली ऑल्सो, बिकॉज यू वांट टू यूज ईच एंड एवरी आवर ऑफ डे लाइट. तो आप सुबह उठ के काम करना शुरू कर देंगे. तो एक डे नाइट साइकिल बना हुआ था. बट अब वो डे नाइट साइकिल बहुत बदल गया है, एंड द रीजन इज वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव लाइट, सो वी कीप ऑन स्टेइंग अवेक, वी कीप ऑन वर्किंग टिल लेट एट नाइट. दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकल. हमारी बॉडी इस तरह से नहीं बनाई गई सर्केडियन रिदम के हिसाब से. सर्केडियन रिदम का मतलब ही यही है कि दिन और रात का फर्क होना चाहिए. जो हार्मोन्स हैं हमारे, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन. कुछ एक हमारे हार्मोन्स हैं जो दिन में शुरू होते हैं, जो दिन में जागते हैं. दे increase at dawn, so they are the hormones which help us to wake up. ये हार्मोन्स शाम ढलते ढलते तक कम हो जाते हैं. So then they give us a sign, they give the body a message that now it's time to rest, it's time to sleep. And अगर हम अपना डे टाइम शेड्यूल, वर्किंग शेड्यूल इसके तहत ना करें, then we get in trouble. So the hormone which tells you that night has come, that it is time to sleep, that is melatonin. आशु जी पूछते हैं कि is melatonin secretion suppressed in people with diabetes? So the answer is plus minus, but secretion चाहे कम हो चाहे ना हो, the efficacy is suppressed. Melatonin उतना effective नहीं है in people with diabetes. The reason is one, diabetes, hyperglycemia. The second is जो हमारा वातावरण है वो खराब है. मेलाटोनिन को काम करना पड़ रहा है बिजली के खिलाफ, आसपास के शोर शराबे के खिलाफ, जो रात को 10-11 बजे टीवी चल रहा है उसके खिलाफ, जो मोबाइल पे हमें इतना सारा स्टिमुलस मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. So, because melatonin may not be strong enough, it is unable to fight all these uh, various stimuli or various counter-regulatory stimuli. And that is why we have to work on it. Melatonin can be used as a tablet also. This is prescribed to people with jet lag. Supposing there is someone who is traveling from India to USA and then back, and this is quite frequent. And when the person has to sort of, get down from the plane, he has to work immediately. But it's difficult because the time zone has changed. ऐसे में melatonin actually helps. We have Rajendra Agarwal ji from Bangladesh as well. So warm welcome to people from all countries. And Dr. Rajiv Avasthi point करते हैं कि sleep apnea is a major problem. And actually Dr. Sandeep Suri is an expert on sleep apnea. So we'll speak with him about that. Welcome Dr. Sandeep. Yes, good evening. क्या हाल है संजय? सब बढ़िया. आपको इंट्रोड्यूस करता हूं सबको. डॉक्टर संदीप सूरी हैं, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट एट हिसार इन हरियाणा, और हम दोनों क्लासमेट हैं. दैट इज माय क्लेम टू फेम. डॉक्टर संदीप सूरी. माइक ले, इस पे तो लड़ाई हो जाएगी भाई. इस पे लड़ाई हो जाएगी, पर आज पब्लिक में नहीं करेंगे. आज मेरा पहले ही मुर्गा बन चुका है. मैं रूस्टर की कुक्कड़ की हिंदी भूल गया. सो देन अंशु एंड ब्रिजेश पॉइंटेड आउट कि वो मुर्गा होता है. तो अदरवाइज कॉलेज में संदीप मुझे मुर्गा बनाया करता था. And Dr. Sandeep looks after RSSDI, Research Society for Study of Diabetes in India, Haryana chapter,
एंड ऑल्सो इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन, जो फुट केयर की एसोसिएशन है, वो भी हरियाणा चैप्टर के करता धरता डॉक्टर संदीप है। डॉक्टर संदीप, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये बात हो रही थी दैट स्लीप डिसऑर्डर्स कैन कॉज डिजीज लाइक डायबिटीज, अदर मेटाबॉलिक डिजीज. Metabolic disease can cause sleep disorders, and sometimes they can just be correlated with each other. So one comment coming from Dr. Rajiv Avasthi, sir, senior physician है लखनऊ से. Sir is saying that sleep apnea is a major problem which remains undiagnosed. So can you tell us sleep apnea क्या है, हम इसे कैसे diagnose करें, कैसे suspect करें और क्यों करें? Okay. So if you go by the normal sleep cycle, there are 3 or 4 stages of non-REM sleep, and then one last cycle is REM sleep. And most of these, all 4 are being completed within 90 minutes most of the time. And they get reversed. That REM sleep is the last rapid eye movement sleep, and then after that, again non-REM sleep starts. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, depending upon the wave pattern they show on brain mapping and EEG. So there are 4 stages. Sleep apnea is basically a condition when there is an interruption of sleep due to some problem either in the respiratory tract, or it is extrinsic problem, or it is an intrinsic problem. Extrinsic problem can start from upper respiratory tract. Maybe it is the tongue fall is there, or denture problem is there, or there is a throat tissue or the laryngeal tissue is enlarged, retropharyngeal tissue mass has grown up, that there is a swelling, there is edematous, that is due to that happens in obesity. Then diaphragm is being pushed up, and chest wall is much more thick, neck dimensions are on higher side. So they are all basically a part of metabolic syndrome. And then the sleep gets interrupted. Patients doesn't know notices the interruption of sleep, wakes up, sometime moving limbs. Maybe it is associated with restless leg syndrome, abnormal movements, myoclonic jerks. Then patient wakes up, patient gasps for air, or there is a deep breath that happens, and then patient again fall into sleep. And snoring is an integral part of uh, obstructive sleep apnea. So there can be obstructive cause, there can be non-obstructive cause also. So sometimes there is over sedative dose, over alcoholism, and that can also lead to sleep apnea type of syndrome. But most of the time, we are worried about obstructive causes of apnea, and that this leads to all changes in metabolic milieu of the patient. There is increased surge of catecholamine, leading to increased blood pressure, heart rate going up, and then early morning problems are lot many morning problems are there. Patient feels sleepy in the morning, there is headache, there is congestion in eyes, and patient feels lethargic, not able to move out from the bed, not able to do routine work, feel very weak. And these all lead to many problems, and specifically cardiorespiratory, cardiorenal syndrome, and everything that depends upon that whole vasculature is being targeted due to this metabolic syndrome, metabolic problem. तो कहने को तो ओएसए या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहने को तो सिर्फ नींद की बीमारी है, क्योंकि रात को सोते सोते आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। बट प्रैक्टिकली अगर देखें तो जो डॉक्टर सूरी कह रहे हैं, इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है, और दिक्कतें भी आती हैं। तो आपने डॉक्टर सदीप शब्द इस्तेमाल किए आरईएम एंड एनआरईएम, Yeah. सिंपल शब्दों में समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है, एनआरईएम एंड आरईएम का? NREM is non-rapid eye movement. There is eyeball movements, and looking at the eyes at the time of sleeping, and there are various movements that happens behind your eyelids at the time of sleep. Earlier, there is non-rapid eye movements, and most of the muscles starts getting relaxing at that time. This is stage 1, and at that time, the characteristic waves that happen in that on EEG, this is beta activity, that is very high frequency, and the amplitude is very low. Then NERM stage 2 happens when there is decreasing frequency and amplitude increases, but there is no muscle movements. Muscle is getting relaxed, but there are, and also eye muscles are also getting relaxed. Then the stages spindles, they starts appearing in the wave of spindles. So this is somewhat deeper sleep. Then you go into the deep sleep,
and deep sleep is characterized by delta waves. So and that is a deep sleep, and then after that deep sleep there is a rapid eye movement sleep. This is very excellent. We all want to achieve that rapid eye movement sleep because brain is totally active at that time. You can think, you can have every question is being asked, whatever you are thinking before going to sleep, that comes in your mind at that time. You can solve some problems also. You cannot move your limbs, but the musculature is also active, and there is rapid eye movement. So we call it a yogic sleep at that time. We all want that we should go towards REM sleep, and many times we have fragmented sleep. It is stage 1, stage 2, when patient can be aroused easily. But once we go into this type of sleep, stage 4 and then REM, arousal is somewhat less, and you are more into a sort of जिसे हम योगिक उसमें बोलते हैं कि देह अभिमान देह भान खत्म हो जाता है. You get connected with the God and everything is being related. So हम इसको योगिक sleep बोलते हैं. और अगर हम practice करें तो within short duration of time we can improve the onset. We can improve the duration of REM sleep, and also rapid early onset of REM sleep can be approved. Can be you can have that thing. You can train your mind that I should go into REM sleep more. And for that you have to have better sleep habits and many things we are going to discuss today. So this is REM sleep. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो टॉपिक हमने डिस्कस करना शुरू किया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें स्लीप क्वालिटी खराब होती है एंड दिक्कत आती है। अब हम बात कर रहे हैं तरह तरह की नींद की। और कई बार हम लोग बोलते हैं कि कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सोए तो थे 8 घंटे 7 घंटे। प्रदीप जी पूछ रहे हैं मिनिमम आवर्स ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड टू रिमेन हेल्दी। सो इट वुड बी 7 to 8 आवर्स, एटलीस्ट 7 फॉर एन एडल्ट। बट आप देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं 14 से 16 घंटे सोते हैं, 18 घंटे भी सो सकते हैं दिन में। जैसे-जैसे आप बड़े होते जाएंगे, लेस आवर्स ऑफ स्लीप विल बी रिक्वायर्ड। सो इट इज 7 to 8 आवर्स फॉर अ हेल्दी एडल्ट, बट इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो। तो वो डॉक्टर संदीप हमें बता रहे हैं कि पहले होती है NREM स्लीप, उसके बाद REM। और वो जो REM स्लीप है, ये है योगिक निद्रा। आप बिल्कुल योग अवस्था में जाके सोते हैं। और ये जो स्लीप है, ये गुड क्वालिटी स्लीप है। अगर आपको कोई REM स्लीप के बीच में से जगा दे, फिर आप डिस्टर्ब रहेंगे, खिजे-खिजे से रहेंगे अगला पूरा दिन। अगर आपका REM स्लीप का कोटा पूरा हो चुका है, then even if someone wakes you up in the NERM phase, it really doesn't matter so much. You will be able to manage. So the trick is making sure that you get good quality and good quantity REM sleep. डॉक्टर साहब ने जो बात की बड़ी सारी वेव्स की, तो ये EEG पे चेक होती हैं। तो डॉक्टर संदीप, व्हाट इज EEG एंड शुड ऑल ऑफ अस गेट इट डन? No, it is not routinely, because जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना बहुत, जैसे इवन इफ यू आर डायग्नोजिंग समथिंग रिलेटेड टू एपिलेप्सी और मिर्गी के दौरे अगर आप डायग्नोज करते हो ईजी पे, मेनी टाइम दे आर नॉर्मल. दे आर नॉर्मल इन, so you have to see the amount of these abnormality, duration of these abnormalities. Only then you can say that this is fixing into some epileptic syndrome or not. Most of the time EEG of a normal person can have varied pattern, but never it doesn't mean that he is diseased or not. So it is not required for routine. Just like ECG is required, everybody who is above the age of 45 or 40 going for any scheduled program for exercise, then they should go for ECG checkup. But for EEG it is not required until unless you have got some problem, some related problem to sleep disorder. And the REM and non-REM sleep pattern is basically, it takes around 4 to 6 cycles in 24 hours, and each cycle duration is around 90 hours, 90 minutes. So that means you require 6 to 8 hours of sleep for going into REM sleep and having full cycle of the sleep. So this type of cycle 4 से 6 चाहिए आपको 24 घंटे में. तो इसके लिए आप अगर सही एक्स्ट्रापोलेट कर लो, 90 मिनट का हो गया एक साइकिल लगभग, तो आपको ये 4 से 6 चाहिए, तो लगभग आपको 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी चाहिए. नाइदर इट शुड बी लेस देन 6 hours nor it should be more than 8 hours. So appropriate fixed time is 6 to 8, because if you are sleeping more than 8 hours, then it is also faulty, and if you are sleeping less than 6 hours, again it is a problem. डॉक्टर संदीप, कई बार हम न्यूज में पढ़ते हैं यंग हेल्दी एग्जीक्यूटिव्स, पीपल हु आर एट द टॉप ऑफ देयर करियर, एंड सडनली डेथ हो जाती है।
कोई Yes. दिक्कत नहीं थी, ना डायबिटीज ना ओवरवेट, एक्सरसाइज भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये स्लीप डेप्रिवेशन सिंड्रोम क्या होता है? यस, दिस हैपेंस। वो यही मैं कह रहा था कि अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज पुअर एंड इट इज क्रॉनिक, इट इज नॉट 1 day 2 day 3 day, it is chronically persistent sleep deprivation, then you can have all metabolic derangement even if your all tests are absolutely okay. Your lipid profile is okay, your uric acid okay, ECG, TMT, echo is also okay, you are not having any hypertension, not having diabetes, but one factor is disturbed, that is you have got disturbed sleep, that you are under some sort of stress or you are remaining under stress and chronic anxiety and stress, all leading to sleep deprivation, that can lead to all these havocs. And nocturnal surge of these hormones, they can be very detrimental. You don't require any occlusive lesion. Occlusive, आपको coronary में occlusion नहीं चाहिए. Non-occlusive microvascular disorder, microvascular disease can be there in your myocardium, and they can simply push you towards coronary myocardial infarction and arrhythmia. They can be there, and sudden cardiac death has been reported in these patients very frequently. So even if you take care of all the other risk factors and you forget to take care of sleep, आप नींद को भूल जाते हैं, तो भी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ता है। और जिन लोगों का बीपी कम नहीं होता रात को सोते हुए, उनका ज्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज Yeah. होने का। रीजन क्या है? लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन। दिन के हार्मोन्स अलग हैं, रात के अलग हैं, जागने के अलग हैं, सोने के अलग हैं, और हर चीज का बैलेंस है। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो सर्टेनली कुदरत का नियम है, अगर आप कोई भी बैलेंस बिगाड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ पे। एंड मिस्टर शर्मा, शर्मा जी इज नर्सिंग ट्यूटर एट SGPJ लखनऊ। वो पूछ रहे हैं, इफ द circadian rhythm is disturbed in nurses and other night duty workers जो शिफ्ट पे रहते हैं, तो does the risk of diabetes increase? Yes, definitely. Night shift is a basically it's a sort of disorder that you are not opening up toward that circadian rhythm, that is the day night cycle, which the whole जिसके ऊपर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। आप ये देखिए, अर्थ साइकिल से लिंक है। अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज रोटेटिंग एंड अराउंड द सन, एंड द डे नाइट साइकिल हैज बीन क्रिएटेड। हमें अकेला ह्यूमन बीइंग को नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म requires this type of cycle. Even the plants and amniotes and everything, even in those living beings inside the sea, they require this type of cycling. This is very, very important. If you disturb this cycle, as Sanjay is saying, that the hormones are very different. Hormones are very different at night. Night has been provided to you for a sort of that is for resting and for uh, recouping yourself, for regenerating yourself, and for relaxing, and everything being taken care कि सुबह काम आपने कर लिया, अब आपको शरीर और आत्मा से रिलैक्सेशन करनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो टाइम सही नहीं है आपका, and you are working on night schedules, and you are having reversal of this circadian rhythm, then you are going to have problems. You have to create situations कि आपको दिन के समय प्रॉपर नींद आए, ताकि आपका 6 से 8 घंटा प्रॉपर कटे। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। मेरे पास अभी जस्ट few minutes back there was one guy sitting in front of me, and I have given the number, the link to him, maybe he's joining. So he was having night shift and having high blood pressure, just reported systolic blood pressure 170, diastolic 104. He has got family history of hypertension, and he is age of around 35, not more than that. Non-smoker, non-alcoholic, centrally obese, definitely. But कहता है डॉक्टर साहब करूं क्या, मेरे को रात को ही काम करना पड़ता है। तो उनके लिए आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से समय में आपको बता दिया जाए, सुबह का एनवायरनमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो रात को काम करते हैं तो खाना जो खाएंगे मिनिमम ईटिंग होनी चाहिए। एक तो ये लाइट से लाइट खाना खाएंगे जब वो रात को काम पे होते हैं। जितना समय काम हो जाए उससे ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक ए शॉर्ट नैप्स ड्यूरिंग दैट, 20 मिनट्स 30 मिनट्स नैप्स अगर आप ले सकते हैं तो वो लीजिए। सुबह के समय जब आप घर आते हो, प्लीज मूव आउट ऑफ योर मोबाइल्स उस समय बंद कर दीजिए। जब आप घर आते हो मोबाइल्स बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपका सोने का समय है। आइस कवर यूज कर सकते हैं आप, कर्टन्स डार्क हैवी कर सकते हैं, वेरी वेरी डिम लाइट्स,
और उसके बाद आपको सोना है। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, रात को काम करते हैं, सुबह घर के काम करते हैं। सुबह आपके आपको राशन पानी की लिस्ट मिल जाती है। सुबह आप आते हो जी, रात को काम करके अब मुझे कौन देखेगा, अब आप सारा काम करो घर का। तो ना वो रात को सोता है, ना वो दिन को सोता है। इसी तरह से बॉडी एडजस्ट हो जाती है। 3 से 4 घंटे की नींद में बॉडी गेट्स एडजस्टेड, उसको फील नहीं होता। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रीप अप हो जाती है। Hypertension and resistant hypertension that has been linked with obstructive sleep apnea, night shift programming, and it has been directly linked. And more coronaries will be there, more heart attack, strokes will be there if we don't teach these people how to take care of their daytime, so that they can have proper lights, like dim lights in the morning and maybe bright light where they are sitting in their office in the night. So that can be tackled at that by doing so. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है डॉक्टर सूरी, एंड थैंक्स फॉर दैट। अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं या शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं तो सर्टेनली द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस गोज अप। ये तो आंसर हुआ शर्मा जी का। बट उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, ज्यादा अहमियत है, वो है डॉक्टर संदीप की बेस्ट प्रैक्टिस की, कि जब आप रात को ड्यूटी पे हैं तो कम खाना खाएं, और जब आप वापस आए घर पे तो आप ऐसा वातावरण क्रिएट करें, क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव टू स्लीप। Minimum exposure to sunlight, minimum exposure to noise, minimum exposure to mobile phone or to internet. So you reduce the stimuli, and if you can sleep for 4 hours or so during the daytime, 4 to 6 hours, then आपका cycle ठीक बना रहेगा and you will not face all these metabolic problems. डॉक्टर पवार सर भी शेयर कर रहे हैं कि सपोजिंग यू हैव स्लीप एपनिया, दे विल डायग्नोज विद अ स्लीप टेस्ट, एंड आपको मशीन दी जाएगी, एंड डॉक्टर साहब इज 72 years old, सर इज सक्सेसफुल यूजिंग अ फिलिप्स रेस्प्रोनिक मशीन, एंड ही इज डूइंग वेल विद दैट। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर नूर आगा भी आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर आगा दानिश हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, सो वार्म वेलकम नूर। Great. Yeah. अतुल जी पुणे से हैं। अतुल जी दो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक तो ये कि डॉक्टर के अग्रवाल सर भी मेलाटोनिन सजेस्ट करते थे पोस्ट कोविड। सो आफ्टर कोविड समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल फेज। सो डॉक्टर संदीप, योर एक्सपीरियंस यूजिंग मेलाटोनिन इन डायबिटीज, इन स्लीप डिसऑर्डर्स, इन जेट लैग पोस्ट कोविड? Yes, melatonin is basically an hormone, which is very important hormone, and it is secreted from pineal gland. And I just wanted to talk about something about the pineal gland, because many times in endocrinology we don't talk about this gland. It's a small gland, very small gland, and it has been detected, or you can say it has been first reported 130 to 200 BC. So very very age old, and you can say that historically known gland, and its a shape is just like a pine tree, and it is a pointed like a red light pointed, and where it is located, exactly where you put your tilak, that is in between the भ्रुकुटी के बीच में, जिसमें हम आत्मा बोलते हैं, that is the seat of soul for this pineal gland. And it is a bridge between material and spiritual life. So it's very very important. We call it a third eye also. And it is a function is basically photo neuroendocrine system. It is photo neuroendocrine system, which is the pineal gland is the basic part of that. We have got suprachiasmatic nucleus also, and VLPOs and TMN. They are also an important part of this photo and neuroendocrine system. But pineal gland, definitely it is a very important part. Retina is your one part, then central nervous system, and third part is pineal body. And this pineal gland, it secretes melatonin. Melatonin acts on each and every part of your body. It is not only the neurotransmitter, it has got action on each and every part of your body. It is the circadian rhythm regulator. Basically, it is secreted at the time of night, and it regulates so many things. Like that there are insulin that has got rhythmic fluctuations of insulin secretion. It is being maintained by melatonin. Your hepatic glucose output at the time of night, how much amount of glucose should come out from your liver, and that is required for your liver, also muscles, adipose tissue, and importantly for brain at the time of night, because you are not taking anything orally. That oral hepatic glucose output is also being regulated by melatonin. How much lipid, how much there should be lipogenesis, and how much should be lipolysis.
How much should be insulin resistance at the time of night? It is also dependent upon melatonin. Your body temperature at the time of night is dependent upon the melatonin. It is an antioxidant. That's why Dr. KK Agarwal was advocating for this. It is antioxidant and related to nerve 2 type of signaling. So it is antioxidant. It is also oncostatic. That is, we call it that it has got a decreasing effect on metastasis and uh, Yes. cancer progression. It has got beneficial effect. Free radical scavenging effect is there. And in rat models, it had shown that it maintains your insulin sensitivity also. So it is very important hormone. So that's why we targeted melatonin. And if you remember the Defronzo's ominous octet, the brain is one part of that ominous octet, pathophysiological factor that contributes to hyperglycemia. So we targeted melatonin, and 3 milligram melatonin sustained release was used initially, but it has to be taken early morning, empty stomach, and there was some sort of nausea. So and lesser amount of HbA1c reduction was there. We tried it earlier. Sanjay must be remembering it. We tried this molecule earlier also, and somehow it is not in much popularity nowadays, and that's why it is off. But it is a great molecule. I am using melatonin 3 milligram in many my patients in sleep disorders, anxiety disorder, even alcohol's abstinence for alcohol. It has got very good results. And also when we are doing exercise, like Sanjay and me both are doing regular gym exercise, if we take this melatonin, it improves our exercise capacity also. It increases your muscle bulk also. It has got proteosynthetic effect in the morning hour, specifically early morning meal, that is being converted more into converging, and also proper distribution of early morning meal at the time of breakfast is being taken care by melatonin. So it's a very excellent molecule, excellent idea. So this question coming in from Indira ji and from other people also, uh, like Dr. Vibha. So one answer is that, of course, you can always take a sleep tablet अगर आपको नींद नहीं आ रही, but one simple way is that you can take melatonin after dinner. But उससे ज़्यादा strong message जो आ रहा है डॉक्टर सूरी से, एक तो ये आ रहा है that we can use melatonin, and दूसरा है regular timings. So regular timings for sleep. अतुल जी एक question पूछ रहे हैं. He says, I can go in without thoughts. I can go into a state without thoughts, even though I am fully conscious. Is it sleep or is it some other state? Is it It's a something normal? trance. We call it a It's a, trance. that It's is a a, yogic it's a mind. sort of trance, yogic trance. It's a very good habit. You go inside, and we usually go outside. But if you go inside and you become silent from, and your you decreases your thoughts. And you know that thoughts are basically three types of thoughts we create every day. It is positive thoughts, and then negative thoughts and wasteful thoughts. 90% of our thoughts are wasteful thoughts. We keep on thinking about Ukraine and Russia, and we are not doing anything. And we cannot do anything. We keep on Hmm. thinking about our road problems and anything, but they are not in our hands. Yes, we can think positive. We should try to use positive thoughts as much as possible. So, and we should improve the quality of thoughts also. That's why we call it a traffic check. And in Brahma Kumari, we call it a traffic check, that after 1.5 hours, there is a song that starts on our mobile, and that reminds us that we have to be connected with Shiv Baba or God. And and that reminds us कि आप कहाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो. And immediately that brings back us. And that is the way of training your brain. That is a very good idea, and it also tells us that maybe that is the logic behind the पांच नमाज. तो जो Yes. believers हैं इस्लाम में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, that is also like a traffic check. And Surya Namaskar would be another way of getting that sleep wake cycle to wake up. So these are good things actually. Thanks, Dr. Sandeep, for pointing them out. Other questions now related to diabetes. Pradeep ji पूछते हैं, diabetes and prostate enlargement. बाथरूम के लिए उठना पड़ता है रात को. Does that impact the quality of sleep? Yes, definitely. If you have got interrupted sleep, and the duration of that interruption is higher,
And after that interruption, you fall, try to go back into the sleep, and then again you take some time to induce sleep. Definitely it is a problem. Early morning, you will feel problems that I am not being sleepy, I am not being able to sleep properly, and my quality of sleep was disturbed. So definitely this is a problem in elderly patient. Overall, in elderly patient, these cycles are also on shorter duration. They become very short, very rapidly changing cycles are there, and REM sleep duration also goes down. That's why they always wake up early morning, and they feel that they are sleep deprived. So with elderly, there is a definitely a problem. We have with us Dr. Vijay Kapoor. Mr. Vijay Kapoor is an industry leader in the field of diabetes and insulin care. He asks about nightmares, bad dreams, and sleep. S- Supposing there is a person with bad dreams, bhayanak sapne, bhayankar sapne, what kind of things can be going on in a person with diabetes? See, usually diabetes leads to depression and distress, because it's a chronic disease, it's a progressive disorder, and you have to do a lot of things to get it under control. Your diet should be okay, your your exercise schedule should be okay, you have to restrict yourself from many things. Then your medications are there, you have to be very regular. It has to be disciplined way of living that you call to manage diabetes. So itself, diabetes can lead to a sort of distress, anxiety, constant pressure can be there. Plus there is additional problems, and it is the cost of the therapy. Then your families and your social circle is being hampered by diabetes. So it's a big issue, it's a big problem to have a diabetes distress type of condition. And this can lead to definite problem that once you go into sleep, you are having your brain active at that time, your all windows are open. That windows of your like your computer that gets hang up. So if your all windows are open and you are going to sleep, and once you go into REM sleep, then you start dreaming, and all those things, undone work and all those negative feeling what you had before going to sleep, that become a sort of dream. So if you analyze their horror or bad dreams, so you will be able to pick up that this man has got this problem. So sometimes we don't find this type of time in our OPD, because, but we should rather do it. That we should also ask about the sleep related dreams and what type of nightmares they have. And sometimes patients have hypoglycemia. Don't miss hypos. Hypos can lead to fearful dreams or sometimes screaming at the time of night, specifically in type 1 diabetic patient. So always ask about the night type of dreams which they have, because they can be related to hypoglycemia. Nocturnal hypoglycemia can present as a fearful dream, nightmares at the time of sleep. So So, Dr. definitely dreams can be there. Yeah. डॉक्टर सूरी जो कह रहे हैं कि जो बैड ड्रीम्स हैं, बुरे सपने, वो तो कई बार होता है कि आपके दिन की रिफ्लेक्शन है, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग और डूइंग ड्यूरिंग द डे और एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग द डे। अगर हम बात करें नाइटमेयर्स की, जिसकी हिंदी सबसे नजदीक वाली होगी भयंकर सपने, एंड डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल एक पॉइंट रेज कर रहे हैं, मेनी टाइम्स डेथ अकर्स ड्यूरिंग स्लीप, नॉट दैट एक्चुअली द पर्सन डाइज, बट नींद में हम गुजर गए। So these are very Yes. extreme examples of nightmares, and the commonest reason is hypoglycemia. अगर सिंपल लफ्जों में देखें, या तो रात को सोते हुए आपकी शुगर कम हो गई आपके ब्रेन में, हो सकता है नमक कम हो जाए, और हो सकता है ऑक्सीजन कम हो जाए या पानी कम हो जाए। Let us do these four things one by one. And Mr. Vijay Kapoor also asks us, शुगर कम हो गई किसी शुगर वाले मरीज में, तो usually it is because of the tablets or the insulins that are taken at night. So his question is, do we have good quality insulins now that we can use at night, जिनसे शुगर लो होने के chances minimum हो जाते हैं? Yes. We have got good amount of analog insulin, both uh, uh, perennial insulin and also basal insulin. And analog insulins are very good quality and very excellent pharmacokinetic, pharmacodynamic profile, and there is very least amount of intraday variability is very low. And there have been lot of studies on CGMS also, and AGP flash liver profile has also been seen in both in type 1 and type 2 diabetic patients, that there is
less amount of nocturnal, significantly less amount of nocturnal and anytime hypoglycemia with these good quality insulin. So definitely this thing has been taken care by around 50 to 60%. Now we don't see these type of things routinely because we are using more of analog insulin. So analog insulin, one thing is clear that they are just equal to routine insulin as per their glycemia reduction part is there. Insulin is insulin. They have equal capacity to decrease HbA1c value and your fasting and postprandial. But how they decrease it, that matters. So analog insulin, they decrease by making it very, very smooth and very easy to manage and least amount of hypos are there. So you have got a car or a driveway that is very smooth, having a lot of seat belts and also good the air cushions are there, so you feel that you are in a good hands. So that's the basic thing with analog insulins. तो अगर रात को बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, भयंकर सपने आ रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि आपकी शुगर लो हो रही हो। आप मशीन में भी चेक करेंगे, हो सकता है नॉर्मल आए, मगर ब्रेन के अंदर जाके देखेंगे वहां पे शुगर कम होगी। तो इसका जो तरीका है, रात को सोते हुए एक लेट नाइट स्नैक, मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मे बी अ फ्रूट, एंड साथ में बेटर क्वालिटी इंसुलिन। तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सो दिस वुड आंसर द क्वेश्चन दैट डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल आस्क्ड। इसी का आंसर देते हुए, जो डेथ एक्चुअली हो जाती है नींद में, या तो शुगर बहुत कम हो गई या नमक बहुत कम हो गया। तो जो हमारी बॉडी है वो नमक पे चलती है, बिजली पे चलती है, एंड अगर वो नमक कम हो जाए, सोडियम या पोटेशियम, देन ऑल्सो वी कैन गेट इन ट्रबल। तीसरा है ऑक्सीजन की कमी। मेनी टाइम्स यू वुड हैव सीन, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, आपने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी और हीटर भी चला दिया, और फिर जब आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हेडेक के साथ उठते हैं। द हेडेक इज एक्चुअली योर हेड इज टेलिंग यू कि मुझे खाना नहीं मिला रात को, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली। तो उसका तरीका क्या है, थोड़ी सी विंडो खोल दें। नमी के लिए अगर आप हीटर चला रहे हैं बंद कमरे में, तो थोड़ा सा पानी रख लें एक परात में और इन अ वाइड माउथ बोल। तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा, एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई इट। यू कीप सम वाटर इन योर रूम। अब तो विंटर खत्म हो गई है, एंड आप देखेंगे आफ्टर 2 और 3 डेज इट विल ऑल हैव इवेपोरेटेड। वो इवेपोरेट कब हुआ? रात को सोते हुए जब आपने हीटर चलाया हुआ था। सो हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैलीमिया, ये सब चीजें हैं जो ये गड़बड़ कर सकती हैं रात को सोते हुए। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर राजीव अवस्थी सर कह रहे हैं, कैन यू, सर इज सीनियर फिजिशियन, हाउ कैन वी टेल नॉन मेडिकल पीपल, एवरीबडी लॉग्ड इन, हम सिंपल हिंदी में, इंग्लिश में कैसे समझाएं कि स्लीप एपनिया के टेस्ट के लिए कब जाना है? कौन से 2-3 लक्षण हैं जो हमें बताएंगे कि हम स्लीप एपनिया की जाके अपने डॉक्टर से बात करें? देखिए, बेस्ट होता है जो आपके स्पाउस, जो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हैं, जो आपके शेयरिंग द सेम रूम, इफ यू आर शेयरिंग ए सेम रूम, और वो आपको या आपके बच्चे ये बता देते हैं कि पापा को या मम्मी को खराटे बहुत आ रहे थे, इनको खराटे बहुत आते हैं। पहला सिम्टम ये होता है। बहुत मुंह से आवाज आती है, सोते हैं तो लाउड खराटे आते हैं, इनके साथ कोई सो भी नहीं सकता। दिस इज वन। स्नोरिंग। सेकंड, ये बताते हैं कि बीच बीच में हम देखते हैं, क्योंकि देखो दूसरा आदमी सो नहीं पाएगा अगर आपके खराटे चल रहे हैं, तो ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वो कुछ ना कुछ समय आपको देख रहा है। सोते सोते इनकी नींद टूटती है, 10-15 मिनट सोते हैं, फिर नींद टूटती है और मुंह से अलग सी आवाज आती है, हाथ हिलता है, जर्की मूवमेंट होती है, और फिर लंबे लंबे सांस लेते हैं। 2-3 जैसे गैस करते हैं, 2-3 लंबे लंबे, दे हैव एयर हंगर, एंड वो 2-3 लंबे लंबे सांस लेते हैं, फिर दोबारा इनके खराटे शुरू हो जाते हैं, फिर अगेन ये साइकिल चलता रहता है। सुबह जब ये उठते हैं तो इनको ये बहुत वीक फील करते हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि आपको खराटे आते थे, आप तो सारी रात तंग करते रहे हो, तो इनको कुछ नहीं पता होता। ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि आपको, आपके साथ, क्योंकि ही इज नॉट नोइंग, ही इज नॉट नोइंग, ही इज नॉट डूइंग इट विलिंगली, ही और शी इज नॉट नोइंग। तो सुबह उसको हैवीनेस हेड में फील होता है, ही और शी फील्स वीक, इरिटेटेड, इरिटेबल, और एंक्शियस फील करते हैं, स्वेटिंग भी बहुत होती है, वॉक के लिए नहीं जा पाते, काम पे भी बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट साथ में है, डे टाइम स्लीपीनेस बहुत होती है, सोमनोलेंस इन द मॉर्निंग। इवन रीडिंग्स, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, हाथ से कप गिर गया इनके, इनको पता ही नहीं लगा, चाय का कप गिर देते हैं, हाथ अखबार गिर देते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं। इवन बहुत अच्छा टीवी का कोई प्रोग्राम जो इनका बहुत फेवरेट है, कपिल शर्मा शो लगाया हुआ है, उस पर भी सो जाते हैं। then that means it is absolutely, it's pathological। ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं, और 1-2 बार तो इन्होंने टक्कर ही मार दी है,
तो these are the symptoms, definitely these are the symptoms. बाकी चीज तो हम देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगी, शुगर्स आर नॉट अंडर गेटिंग कंट्रोल, और पेशेंट इज डेवलपिंग सम कॉर्नरी इश्यूज, स्ट्रोक हुआ, टीआईए, तो वो तो पार्ट है लेटर स्टेज कॉम्प्लिकेशन होने का, उससे पहले ये सिम्टम्स होते हैं। फिर मॉर्निंग आवर्स में इनको भूख ज्यादा लगती है, दिन में कुछ भी मिलता है खा लेते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, और समटाइम इट इज रिलेटेड टू इवन यूरिनरी इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एट नाइट ऑल्सो, क्योंकि आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उससे इट गेट सप्रेस्ड एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज डायरोसिस एट नाइट टाइम। सो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम की बार बार उठ उठ के रात को नींद भी, स्लीप, यूरिन भी पास करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो इनको पॉलीसोम्नियोग्राफी करवानी है, उसके लिए इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है एक रात के लिए, और दैट नाइट में हम लोग इनके सारे लगाते हैं टैग्स वगैरह, सारा ईसीजीज भी होती हैं, एंड देन देयर इज प्लेथिस्मोग्राफी एंड एवरीथिंग इज देयर, और सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते हैं। एपनिया, स्लीप एपनिया, एपनिया प्रो एपनिया स्कोरिंग सिस्टम होता है, एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच इज द एपनिया पीरियड, हाउ मच वाज द ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, एंड देन इंटेंसिटी ऑफ एपनिया, हाउ मच डीसैचुरेशन पेशेंट वेंट इनटू, कितना उसका ऑक्सीजन कम होता है। उसके बाद हम इनको मशीन्स जैसे सीपैप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप में से कुछ लोग यूज भी कर रहे होंगे, एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव टूल टू डू इट। बट द बेस्ट थिंग इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Along with lifestyle, Pradeep Sarvaiya sahab कहते हैं that Shavasana is helpful for insomnia. Yes. So Yeah. yoga also does help, and yoga is also not the same for everybody. जैसे योगा के अलग-अलग आसन हैं, अलग-अलग practices हैं. Some will be good for daytime, some will be bad for bad time. And if you meet a good yoga teacher, he or she will tell you कि कौन सा आसन कब करना है, आपके लिए क्या suitable है. It is possible कि डॉक्टर सूरी के लिए अलग आसन बताए जाएं, मेरे लिए अलग और प्रदीप साहब के लिए अलग. We'll continue. Let me take two questions together, Dr. Sandeep. Already 50 minutes हो चुके हैं, तो ये दो questions इकट्ठे लेता हूँ. अतुल मुले साहब पूछते हैं, why do doctors not prescribe sleep tablets to drinkers who drink alcohol daily just to get sleep? So many people will come and say, I don't want to drink alcohol, but नींद के लिए मुझे लेना पड़ रहा है. That is the bahana, that is the excuse. So why do doctors not do that? And करना प्रमोद जी कह रही हैं कि natural sleep और स्लीपिंग पिल्स खा के जो नींद आती है, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? Is there a difference in REM, NREM quality? Yes. Natural sleep is always best, the best. Because if you induce sleep by taking sleeping pills, there are many factors. You will have same cycle. You will have same cycles, all stage, NREM and REM, and then REM will be there. But REM will be shortened. You will have more of NREM sleep. And that's why in the morning, you will feel much more drowsy. And you will not feel that much energetic. You will not feel कि क्या बढ़िया नींद आई है. You will not feel like that. मॉर्निंग, सुबह का जो समय होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जब हम लोग सब कुछ शुरू कर रहे होते हैं. जो फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन द मॉर्निंग, उठते ही है, वो सारा हमारा पूरे दिन का भविष्य लिख देता है. तो वो समय हमारा स्लीपिंग पिल्स पे नहीं आता. इसीलिए बेस्ट स्लीपिंग प्रैक्टिसेस ही हम लोग बोलते हैं कि आपके लिए सबसे बढ़िया. दूसरा, जो अल्कोहल लेते हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर वो विड्रॉल के लिए एडमिट होते हैं और वो दे वांट टू गेट रिड ऑफ अल्कोहल, कुछ समय हम स्लीपिंग पिल्स उनको देते हैं. अदरवाइज दे कैन हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, और उनको ट्रेमर्स, डिलीरियम ट्रेमर्स कैन बी देयर, और डिलीरियम ट्रेमर्स एंड इवन सीजर्स कैन बी देयर ड्यू टू विड्रॉल्स. सो हम उनको कवर करने के लिए 15 दिन 20 दिन तक हम उनको स्लीपिंग पिल्स भी देते हैं, हम उनको एंक्सियोलिटिक्स भी देते हैं, हम उनको बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, हम उनको मसल रिलैक्सेंट्स भी देते हैं, और हम इनको थायमिन, मिथाइल कोबालामिन का भी लोडिंग देते हैं. तो ये एक विड्रॉल कॉकटेल होती है जो हम देते हैं अल्कोहल पेशेंट, जो दोज हु वांट टू लीव इट, और जिनको इसमें विड्रॉल सिंड्रोम आ रहा है. अदरवाइज अल्कोहलिक को अल्कोहल छोड़ने के लिए हम स्लीपिंग पिल नहीं देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा जाता है कि ये कंबाइंड ड्रग एडिक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग. Suppose we prescribe something anxiolytic, he will take that anxiolytic with one or two peg. So that is much more respiratory suppressant that can be very detrimental, or sometimes that can even lead to death also, because there are always a chance of overdosing.
and there is always a chance of tachyphylaxis by using sedatives, hypnotics and sedatives. So always there is an incremental dose. They keep on trying for more and more doses, and that's why we don't give them that tablets. तो उसका भी नशा होता है अतुल, एंड द क्योर माइट एंड अप बीइंग वर्स देन द डिजीज. Yeah. मर्ज से तो दवा बदतर. लॉट्स ऑफ पीपल थैंकिंग यू डॉक्टर संदीप. डॉक्टर कृष्ण रावल जी हैं, सविता बुटानी मैडम हैं, और प्रतिपति राम बाबू जी एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट मी ट्राई टू टेक इट वेरी काइंड ऑफ फास्ट. डायबिटीज है, HbA1c is 6.4, so that is very good, but I have to get up at night to pass 2 to 3 times in the middle of deep sleep, so I don't like that. So it might be prostate, it might be a urinary infection, it also might be some medicine that you are taking during the daytime. तो एक बार प्रोस्टेट का चेकअप और यूरिन का तो होना ही चाहिए टू सी के कोई इन्फेक्शन है या नहीं, प्रोस्टेट है या नहीं. समटाइम्स इट कैन बी एन इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, राम बाबू जी. तो जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं वो आपको बताएंगे कि आपका ब्लैडर कैसा है, पेशाब की थैली कैसी है. अगर प्रोस्टेट नॉर्मल आ गया है साइज में, इट डजंट मीन कि और कोई दिक्कत नहीं है. देयर कैन बी अदर थिंग्स आल्सो. एंड आप अपनी टैबलेट्स भी एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें. पॉसिबल है कि कोई शुगर की टैबलेट या ब्लड प्रेशर की टैबलेट की वजह से बाथरूम आ रहा है ज्यादा. So they will change the timing of that tablet, or they might stop that tablet totally. डॉक्टर NS शारदा सर आपको ग्रीट कर रहे हैं. डॉक्टर संदीप सर इज वेरी सीनियर फिजिशियन फ्रॉम अहमदाबाद, एंड मुकुल गुप्ता इज वन ऑफ आवर अदर इंडस्ट्री लीडर्स, एंड ही कम्स फ्रॉम यमुनानगर इन हरियाणा. सो वार्म वेलकम मुकुल. एंड मुकुल भी आपको नमस्ते बोल रहे हैं डॉक्टर संदीप. Yeah. And Dr. Pramod says how sleep apnea can cause hypertension, diabetes, CAD. So Dr. Suri had tried to explain that पूरा मिलियू बदल जाता है बॉडी का, इन्फ्लेमेशन होती है, और बॉडी को जब रेस्ट नहीं मिलता रात को, तो जो रात को बॉडी बेसिकली अपने आप को रिपेयर करती है. इफ वी कैन एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, दिन में हम काम करते हैं, दिन में आपने गाड़ी चलाई, आपने काम किया, अपनी सब मसल्स यूज की, उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना मशीन को. तो वो रेस्ट हमें रात को मिलता है. अगर आप सो नहीं पाएंगे एपनिया की वजह से, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके हार्ट को रेस्ट नहीं मिलेगा, सो हार्ट डिजीज विल अकर अर्ली. आपके पैंक्रियास को रेस्ट नहीं मिलेगा, डायबिटीज विल अकर अर्ली. एंड आपकी जो खून की नसों की अंदर की लाइनिंग है, दैट इज एंडोथेलियम, उसमें सूजन आ जाएगी. उसको जब रेस्ट नहीं मिलेगा, खून की नसें रिलैक्स नहीं कर पाएंगी, तो नेचुरली वो भी बूढ़ी हो जाएंगी जल्दी. सो दैट इज हाउ हाइपरटेंशन विल कम इनटू द पिक्चर. And Dr. Prasanna Kumar also points out that many of our young boys and girls are doing night duties or shift duties in call centers, and we are serving the clients of America and Canada, and it does actually help the health of both our boys and girls. So that is true. Lekhram Sharma ji पूछ रहे हैं empty sella. No sir, it has no connection with the pineal gland. Pituitary gland is separate and pineal gland is separate. पूजा सिंह जी पूछ रही हैं ब्रोमोक्रिप्टीन वाज गिवन फॉर डायबिटीज विद ब्रेकफास्ट, बट मेलेटोनिन इज गिवन एट नाइट. सो शी सेज इफ आई वांट, कैन आई टेक मेलेटोनिन 3 milligram आफ्टर ब्रेकफास्ट? But that is basically a night hormone, and it induces sleep. So I think it should be taken at night. After dinner, yes. Yeah. And Dr. Pramod is asking, without estimating blood melatonin, you actually don't need to do that, Pramod. Yes. So can we prescribe melatonin? Yes. Yeah. Yes. We can go ahead. Yeah. We can prescribe melatonin 3 milligram. If it doesn't work, 7 milligram you can try, and certainly it is much safer than the sleeping pills. पूजा जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, सर कोई नुस्खे बताएं नॉन ड्रग रिलेटेड. आपने कहा था वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स टू इंप्रूव आवर डीप स्लीप और आवर REM स्लीप. Yes. तो आप क्या करते हैं सर? Okay. Actually, it is very easy for me and my family, because we are in Brahma Kumaris, and we wake up at early morning. अमृत वेला बोलते हैं जिसको. हम 3:30 बजे उठ जाते हैं, और रात को 10 बजे, 10 मतलब 10 और बस. हमारा एक घर का नियम है, 10 मतलब बस. 10 के बाद कुछ नहीं होता. शटर डाउन, गेट लॉक्स. ठीक है, रात को अगर मुझे इमरजेंसी कॉल आती है तो वो मेरा काम है अटेंड करना. वो मैं देखता हूँ अपने मोबाइल पे कैसे बात करनी, इसी चीज है. ये एक होता है सर. एंड समटाइम संजय पुट्स मी इनटू हॉट सीट, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है. अदरवाइज हम लोग 10 बजे बंद और सुबह 3:30 बजे उठ के अमृत वेला हम लोग करते हैं. ये हमारी एक प्रैक्टिस है, लास्ट 6 years है. तो कैसे हुआ?
देखिए पहला प्रिंसिपल है सेम टाइम ऑफ एवरी डे आपको करना है। आपको बॉडी आपके ब्रेन को ट्यून करना है कि मेरे को 10 बजे सोना ही सोना है। तो आप ध्यान ये याद रखो, अगर आगे ये करोगे 10-15 दिन आपने कर लिया तो 10 बजे आपको उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी और आपके मन से होगा नहीं यार मुझको बस अब सोना है, अब सारे काम बंद। तो वन थिंग इज सेम टाइम एवरी डे, ट्राई टू डू इट। नंबर टू, आफ्टर 2 hours आफ्टर डिनर गो फॉर स्लीप। 2 hours एटलीस्ट, टेक 2 hours। ऐसा नहीं रात को 10 बजे खाना खाया और उसके बाद सोने चले जाएगा इमीडिएटली, नहीं होगा, क्योंकि योर स्टमक इज फुल ऑफ योर मील्स, इंटेस्टाइन इज रिक्वायरिंग ब्लड, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। सो 10:30 8:30 हमारा किचन बंद हो जाता है। जैसे हमारी हॉस्टल की मेस बंद हो जाती थी तो संजय यूज टू रन फॉर द मील डिनर, भागना पड़ता था, पर नो, नथिंग इज सर्व आफ्टर 8:30 एट नाइट, किचन इज क्लोज आफ्टर 8:30। देन बेडरूम एनवायरनमेंट हमारा, वाइफ का और हमारा ये सिस्टम है कि कोई डिस्कशन नहीं होगी। 8:30 बजे तक जो डिस्कशन करनी कर लो, 10 बजे तक के बाद कोई डिस्कशन, नथिंग नथिंग। आवर बेडरूम एनवायरनमेंट, लड़ाई झगड़ा भी योर नहीं बेड करते आप? लेन। हाँ जी, लड़ाई है, नहीं लड़ाई लड़ाई लड़ी झगड़ा वो भी नहीं सवेरे कर करते? लेंगे ना यार, राती को देखने वाला अच्छा, नहीं पर होता तो ना, सवेरे पूरे कर लेंगे। में दसी ना किसी ने। सच, सच, ट्रू, ट्रू स्टोरी। और व्हेन यू आर इन ब्रह्मा कुमारी लड़ाई होनी बंद हो जाती है। So bedroom environment is very important. Your linens, your sounds in the room, the light music can be start. Have you can have light classical music or whatever you think. Sounds, lights, absolutely dim light should be there. Peaceful music can be there. So this makes your brain that कि अब सोने का समय आ गया, अब सोने का समय आ गया। जैसे आपको आपकी मदर लोरी दे के सुनाती थी, बिल्कुल ऐसे ही अपने ब्रेन को डेली लोरी दे के सुनाना है। देन डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने बच्चों को करता हूं। उनको ये बताना बड़ा जरूरी है कि 8:30 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं होगा। अगर आपने कुछ देखना भी है, इट शुड बी समथिंग फनी और लाफ्टर शोज और सम कार्टून्स कैन बी देयर, दैट कैन बी, बट नॉट एन यूएफसी और हॉरर मूवी और यूक्रेन रशिया वॉर, नो। ओके, देन ट्राई टू क्लोज ऑल योर विंडोज। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली करता हूँ, विंडोज क्या है कि सुबह क्या हुआ था, ओपीडी में किसके साथ भिड़ा, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसकी दवाई गलत लिखी गई, किसने आके मुझे कहा कि इंसुलिन ज्यादा दे दी, किसने, कौन, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू फॉरगिव yourself, other also, forgo everything and forget everything, so that you have to clear your daily account book, बिल्कुल साफ कर दो। then if you do it like that and try to remember your god at that time, I think you will not have any problem, you will not have any problem। और जिस समय आप उठना चाहोगे exactly good quality sleep लेके उसी समय आप उठोगे। सो आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड इससे सरल, इससे आसान, बट इससे दमदार कोई मैसेज नहीं हो सकता। सो डॉक्टर सूरी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस, एंड आई think this message, this best practice that you've shared with us, if we can all do that, that will replace all the sleep medicines and all the melatonins of the world. It will be much more Yeah, effective. yeah. Nina Agiji हैं, leading socialite from Karnal. She also thanks you. Dr. Thank you। Noor Aga, questions on insulin, if you allow, please let us take them later on sometimes. Dr. Sandeep को ही बुलाएंगे to talk about insulin therapy. He has already spoken regarding the good quality insulins. Detamir, Glargine, both the names that you are using are analogs. And Subhash Grover साहब भी आपको नमस्कार कर रहे हैं from Seattle in USA. So it's early morning for him there. Uh, and Dr. Pramod, for sleep apnea and best posture, please allow us to discuss that later, maybe in a topic on sleep hygiene. But otherwise, you can try the head and raised posture, the same that you would do in the ICU if someone has pulmonary edema, the same kind of thing. And Dr. NS Sharda sir बात करना चाहते हैं about yoga आसन. So let us find a way, sir, जिसमें हम आपकी expertise और आपके experience से gain कर सकें. ब्रिजेश जी एंड अतुल थैंक यू करें, और अतुल थैंक यू भी। सो अतुल इज पॉइंटिंग आउट के 8 बज चुके, अब निद्रा वेला है। सो Yes। Yes, एंड yes, थैंक यू अतुल, एंड थैंक यू एंड शाबाश बोथ फॉर pointing out that we should practice what we preach. Ashwini yes। ji from Yangon thanks you from Myanmar, and
Pratiksha ji, yeah, you are not able to sleep, but let's try these disciplinary tricks and tips which Dr. Sandeep Suri said. So I think the first thing to do is कि आप अपना dinner का time पक्का कर लें. So just Yes. make it a rule that there won't be dinner after such and such a time. And I think within a week or 10 days, your brain will get sort of, uh, it'll get acclimatized, it'll get tuned to it. Uh, बाकी सबको भी थैंक यू करेंगे एंड संजीव पुरी जी कह रहे हैं यू वेक अप एट 3:30 AM और सोते 10 बजे हैं सो व्हाट डू यू डू अपना काम तो वेरी फ्रेंडली क्वेश्चन कैन यू डिस्क्राइब योर Yes. वर्किंग शेड्यूल संजीव जी पूछ रहे हैं My working schedule starts at 8 a.m. in the morning. After at 8 a.m. I go to hospital rounds. ICU, I take care of ICUs and all discharges. Insulin doses are being settled at that time. Then I go to gym. I go to gym at around 9 and 9 9 9 बजे जिम जाके 1 घंटा 1.5 घंटा अच्छा exercise करके then I come back and I start my OPD at 11 and I start OPD and then goes up to 4 p.m. and 3.5 3 4 बजे lunch लेके then evening OPD starts at 6 and then I go home at 7:30 after taking night rounds evening rounds. तो लड़ाई झगड़े का तो कोई चांस ही नहीं हुआ फिर ना. apart from learning about sleep hygiene we've also learned Yes, about marital harmony from Dr. Sandeep today yes, so, that is very very important. and Brijesh Gangwar ji joins me in saying sir क्या बात है So, lots of thank yous coming in. But one message I would like to take is Sunil ji ka hai, who says that I have started following Brahma Kumari and your input has strengthened my commitment. So that is Yes, one other good thing that has come out. yes, मैं ये कहना चाहूँगा सबको, I would like to share that it's not about religion, it's more about spirituality. It's about yes, discipline. तो अगर आप 5 नमाज रोज पढ़ रहे हैं, that is discipline, that is spirituality. 5 times in a day, there is this traffic check. You are reminded to follow the right path. अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं, कोई रोजा रख रहे हैं, that is also a method of discipline. And you yes, must have seen in Dr. KK's Med Talks, we have a regular series of pre-Ramadan education programs. अगला हमारा प्रोग्राम 14 तारीख को होगा प्री-रमजान एजुकेशन पे विद डॉक्टर MS खान फ्रॉम गोरखपुर. अगर आपने कोई कड़ा पहना हुआ है, कोई आप मंदिर में गए, you went to the temple और मौली बांधी गई, a sacred thread was put on your right wrist. So that is also a way of reminding you not to do wrong things with your wrist or with your yes, hand. So it's yes, all about discipline and spirituality. And Rigved, which is one of the oldest books in the world, Rigved कहती है सत्य तो एक है, the truth is one, मगर रस्ते अनेक हैं, the paths are many. But what yes, Dr. Sandeep has shared with us is it transcends all these paths. You can use sleep pills, you can use melatonin, and you can also just discipline yourself. And if you do that, नींद तो अच्छी होगी, उसके अलावा आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं होगा. He has explained the reasons why. And finally, of course, वो domestic harmony और marital harmony वो एक added benefit मिल जाता है. So, Dr. Sandeep, so many people logged in from USA, from Afghanistan, Nepal, Bangladesh, India. Last take home from your side, क्या कहना चाहेंगे सबको? see sleep एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का. हम लोग मोस्टली डाइट एक्सरसाइज मेडिकेशन इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं और ये पार्ट एक ऐसा रह जाता है कि हम वी फील दैट इट इज इग्नोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. इट इज इग्नोर्ड एंड हम लोग भी इसका ध्यान नहीं रखते. पेशेंट से कभी पूछते नहीं कि रात को कैसे सोए थे आप. तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर फिजिशियंस आर आल्सो इग्नोरिंग इट और सम टाइम इट रिमेन्स एज सच और ये बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारी इल हेल्थ का कारण होता है. And it is linked to lot of psychiatry disorder also like depression, schizophrenia, Alzheimer. So all are being linked with deprived sleep and all those neurohormonal changes that happens with deprivation of sleep. तो आप अगर healthy sleeping habits आप करते हैं और आप अपनी सोसाइटी में एडवोकेट करते हैं तो बहुत चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी and make it an essential part of your healthy lifestyle. So sleep can be a target of disease, but Yeah. sleep can be used to target disease as well. So sleep is a technique, it is a tool with which you can improve your health. और ये सबसे आसान तरीका है. डॉक्टर सूरी आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सबकी तरफ से. प्रतीक, would you be able to show a certificate of appreciation for Dr. Suri?
So thank you, Correct. Dr. Suri. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जैसे आपको पता है रोज के मेड टॉक्स होता है, आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। मैं आपके साथ होता हूँ हर सोमवार और वीरवार। एंड जो हमारा अगला प्रोग्राम है 10th को, उसका एक सरप्राइज टॉपिक है। वी विल रिलीज दैट ऑन द 10th। 14 तारीख का आपको बता ही दिया। दैट विल बी द 4th इन आवर सीरीज ऑफ प्री रमजान एजुकेशन प्रोग्राम्स, एंड दैट इज रेलेवेंट नॉट ओनली फॉर रमजान बट फॉर ऑल फास्टिंग। इट्स बेसिकली अबाउट डिसिप्लिन। एंड विद दिस आईड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। अपना ख्याल रखें, अच्छे से सोएं। डॉक्टर संदीप सूरी का सारा कहना मानना है, और कल से नहीं, आज से ही। तो आज का डिनर जल्दी, आज को जल्दी सोना है, और के मेड टॉक नहीं भूलना। बाकी सब जो बाएं दाएं वाली चीजें हैं, वेस्टफुल थॉट्स हैं, उनको सब कम करें। बाकी स्क्रीन टाइम कम करें, एक्सेप्ट फॉर के मेड टॉक्स। थैंक यू एंड जय हिंद। Great. Thank you. Thank you. Great.